Hello friends, welcome back to JCpedia once again. Our Madhya Pradesh tour is coming to an end today. We started our journey from Delhi on 23rd of November and reached Jhansi and stayed in Orcha. Then visited Khajuraho, Jhansi, Sanchi, Bhopal and nearby, especially the Bhimbetka rock shelters and Udayagiri caves before proceeding to Indore. In the second leg, we had a fantastic street food experience at Chappan Dukan, Indore, before proceeding to Mandu, Maheshwar, Omkareshwar, then back to Indore and exploring nearby, then to Devas and Ujjain, Mahakal, and on to Chanderi, and now in our last leg at Gwalior. Since our train is at 4 p.m. today, we start our day little early. चलो चलते हैं. All the previous vlogs can be seen in my YouTube channel under playlist under MP series. Here is the playlist and you can see all the vlogs in serial order. पौने 7 बजे ग्वालियर की शहर अभी उठी है, जागी है। यादव फैमिली रेस्टोरेंट अभी खुला नहीं। ये क्या है, मथुरा कचौड़े वाले दरवाज़ा खोल रहा है अपना। आगरा चाट नाश्ता ही नाश्ता खुल चुका है। ये हम खड़े हैं अपने डीपी मॉल के सामने। और ये क्या है भैया, आनंद भोज अभी खुला नहीं। आनंद, एक मिनट, इधर आ गया। हाँ, इधर आ गया। कहाँ गया? हाँ, आनंद भोज अभी खुला नहीं है। कल रात को इसमें खाना खाना गए, एयर कंडीशन लिखा हुआ था लेकिन अंदर चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए हम बाहर आ गए। बाहर आके ये डीबी मॉल स्मार्ट बाज़ार, कहाँ गया? डीबी मॉल, डीबी मॉल के कहाँ लिखा हुआ? डीबी मॉल, ये रहा डीबी मॉल। डीबी मॉल के फूड कोर्ट में जाके बढ़िया सा खाना खा के आए, गरम गरम, जिसमें आइनॉक्स भी है, पेंटालून्स है, वेस्ट साइड है, स्मैश है। गरम गरम खाना खाया, उसमें बढ़िया था खाना। सफारी, फिर उसके बाद ये आपके कुछ रेस्टोरेंट खुलने लगे हैं, लेकिन अभी धुंध है हल्का हल्का सा ग्वालियर में। ये ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सामने है, ये देखिए सामने ग्वालियर रेलवे स्टेशन। ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है। और ये हलचल ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सामने। ये हमने स्टे किया यहाँ पे, पार्क इन बाई रेडिस है। वेलकम टू ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर का नाम सुना तो था इतने दिन, जब इस जो 100 किलोमीटर्स आगरा से है, और एक रेलवे स्टेशन आता है जब हम चेन्नई जाते थे साउथ के ट्रिप में। बिग एयर बेस है और सिंधियास के ये फोर्ट है। इट हैज़ ऑलवेज बीन द गोल्डन ट्रायंगल फॉर द टूरिस्ट हु कम टू नॉर्थ, दैट इज़ दिल्ली, आगरा, जयपुर। जब मैं ग्वालियर पहुंचा तो पता चला ग्वालियर का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। Gwalior Fort has been in existence since around 10th century, and some inscriptions and monuments found there lead it further back to 6th century. Believe me, all these just 300 kilometer दूर दिल्ली से. The present day fort consists of a defensive structure and two main palaces, Man Mandir Palace and the Gurjari Mahal, built by Tomar Rajput ruler Man Singh Tomar, reigned 1486 to 1516. The later one for his wife Queen Mrignani. Believe me, the second oldest record of zero in the world was found in a small temple. The stone inscription has the second oldest record of the numeric zero symbol having a place value as in the modern decimal notation, which is located on the way to the top. The inscription is more than 1500 years old. It is learned that the Lodhis and Delhi Sultanate captured the fort and later ruled by the Mughals. Akbar in fact made the fort a political prison, and for example, Abu Qasim, son of Kamran and Akbar's first cousin, was held and executed at the fort.
Guru Hargobind, the sixth Sikh Guru, was also held as a prisoner by Jahangir and was released after 14 years. There is a big Gurdwara out here. Aurangzeb's son and nephew were also executed at Man Mandir Palace. There were frequent changes in the control of the fort between the Scindias and the British between 1808 and 1844. After the Battle of Maharajpur, the fort was occupied by the Gwalior state of Maratha Scindia family as a protectorate of the British government. During 1857 uprising, 6,500 sepoys stationed at Gwalior rebelled against the company rule, although the company's vassal ruler Jayajirao Scindia remained loyal to the British. The British took control of the fort in June 58. They rewarded Jayajirao with some territory but retained control of the Gwalior fort. In 1886, the British were in complete control of India and the fort no longer had any strategic importance to them. Therefore, they handed over the fort to the Scindia family. The Maratha Scindias continued to rule Gwalior until the independence of India in 1947 and built several monuments, including the Jaivilas Palace. All these informations I obtained from the guide, noted it down, and also from some parts from Wikipedia only. It's always better to come and have a direct look at these places. ये राजा मानसिंह को एक राजा दुर्योधन सो ऐसा कहा जाता है इसको कि दुर्योधन सोने के पिलरों को खाना नहीं देते तो ये पिलर है गोल्ड का पता चलता है सहस्त्रबाहु मंदिर या सास बहु मंदिर ग्वालियर फोर्ट के क्षेत्र में स्थित एक 11वीं शताब्दी में निर्मित हिंदू मंदिर है। यह विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है और ग्वालियर के किले के समीप स्थित है। यहाँ मिले शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण कच्छपरात राजवंश के राजा महिपाल ने सन 1093 में किया था। नमस्ते दीदी छतरी साइन बैठे सास बहू टेम्पल ग्वालियर। Telika Mandir, also known as Telika Mandir, is also located within the Gwalior fort, dedicated to Shiva, Vishnu, and Matrikas. It has been variously dated between the early 8th and 9th century CE. It is an atypical design for Hindu temple as it has a rectangular sanctum instead of a typical square. It integrates the architectural elements of the Nagara style and Vallabhi Prasada. Temple is based on Gurjara, Pratihara, Gopagiri style North Indian architecture and some part of South Indian architecture too. उसने जो वो उससे बताया था ना मैंने सुबह इलेक्ट्रिक से वो उनका हेलीकॉप्टर वॉटर। An European palace in India. Scindia's Jaivilas Palace, Gwalior. Yes, Jaivilas Palace, built by the Scindias, is totally inspired by the European style of art with its Corinthian columns and royal arches.
many part of the museum we were not allowed to take photographs. These are some of the chandeliers which I took some photo. However, we were stopped from taking photographs at many other places. What you now see is a hand railing of a staircase where it was written, "Please do not touch." I was wondering why the hand railing of a staircase should not be touched. Then we realized the entire staircase was made of the crystals. It was crystal glass. That is why it was written, "Please do not touch, please do not hold." That's how the Scindias had made this palace as a wonderful palace. However, we were allowed to film the royal train made of silver, which was there at the royal dining hall. Now have a look at that train. जब झांसी की रानी झांसी से भाग के गई अपने घोड़े बादल के साथ, शी वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड कालपी नियर कानपुर। वहाँ पे उसके घोड़े बादल का डेथ हो गया था। फिर वहाँ से एक दूसरा घोड़ा लेके शी केम बैक टू ग्वालियर सीकिंग द हेल्प ऑफ द सिंधियास। हाउएवर द मराठास बिफोर दे कुड हेल्प पता चला कि द ब्रिटिशर्स वर बिहाइंड हर। उसको एक नाला क्रॉस करना था, जहाँ पे वो उसको क्रॉस नहीं कर पाई, वहीं पे वो खुदकुशी करके मर गई। दैट एरिया इज़ नाउ कॉल्ड फूलबाग, और वहाँ पे ग्वालियर पे एक उसकी समाधि और छतरी बनी हुई है, जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। भाइयों, इस रोड का नाम है सचिन तेंदुलकर मार्ग। ये ग्वालियर में, इसलिए इसका नाम सचिन तेंदुलकर मार्ग है। मारा था एक वनडे मैच में। कौन सा साल कब मारा था अभी देख के बताता हूँ। देवियों सज्जनों, जिस रोड में हम जा रहे हैं, इस रोड का नाम है सचिन तेंदुलकर मार्ग। उसके नाम पे इसलिए रखा गया है कि 24 फरवरी 2010
सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में खेलते हुए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ही स्कोर्ड द फर्स्ट डबल सेंचुरी इन अ one-day match. He scored 200 not out and India scored around 400 plus in 50 overs match. It's a tribute to Sachin Tendulkar's master innings उस दिन. नाम ही नहीं है रोड का. इस पे नहीं है ज़्यादा हमारे ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का टाइम हो गया था. हम पहुंचे ग्वालियर रेलवे स्टेशन. ग्वालियर रेलवे स्टेशन एज यूजुअल साफ सुथरा दिख रहा था, बिल्कुल फोर्ट की तरह बना हुआ था बाहर से देखने में. हमारे ट्रेन 4:05 पर था और हम इंतज़ार कर रहे थे अपने ट्रेन के लिए. चलिए आप भी चलिए हमारे साथ प्लेटफॉर्म में. और प्लेटफॉर्म में जाकर देखा तो हम क्या देख रहे हैं, भीड़ भड़क्का. स्टेशन प्लेटफॉर्म में ट्रेन आने पे कैसे शोर मचती है, प्लीज़ सुन लीजिए. जस्ट लिसन हाउ द स्टेशन वेक्स अप व्हेन अ ट्रेन कम्स. This is 11077 Pune Jammu Tawi Jhelum Express. We are waiting for our train Gatiman Express. झेलम एक्सप्रेस के जाने के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी. वी वर ऑन टाइम. 4:05 पे चली. फ्रॉम ग्वालियर वी क्रॉस मोरेना, धौलपुर एंड आवर नेक्स्ट स्टॉप वाज आगरा. सो मेनी फॉरेनर्स बोर्डेड द ट्रेन. द ट्रेन वाज fully packed. Our coach was fully packed. And ultimately we reached Nizamuddin by 6 minutes delayed. So we reached our home on time. With so many historical importance, I think ग्वालियर का एक और विजिट बनता तो है. फोर्ट तो देखना ही है, आराम से देखना है, और ग्वालियर के आसपास भी बहुत कुछ देखने का है. नाउ व्हाट आर देयर टू सी नियर बाई ग्वालियर? चंबल सफारी. इट्स अराउंड 60 किलोमीटर्स अवे चंबल रिवर में, where you can do a safari and also see the ghadials floating around nearby, and also the Padavali group of temples, very historical temples. Then the Mitavali, the round Shiv temple based on which the Parliament House was designed by Edwin Lutyens, as told by people out here. And Sonagiri group of Jain temples dating back to the 9th century. So many historical places around Gwalior. Yes, yeah.